If I tell you to sort a one-dimensional array, you can easily sort it by using arrays.sort method of Java. If I tell you to sort an array list, you can easily sort it by using collections.sort of Java. But what if I told you to sort a two-dimensional array based on second element of each row? And what if I told you to sort a hash map? Or I tell you to sort a one-dimensional array of object based on any property. So you are not able to sort any of this by using array.sort method or by using the collections.sort method. So to sort these kind of things, we have to use comparator operator in Java. And while solving the data structures and algorithm question, in between you might face a lot of questions where you have to sort a two-dimensional array. Like there is a question on lead code that is the maximum number of jobs that can be attended. So in that question, you have to sort a two-dimensional array. So today I'm going to explain the comparator operator, and I will also explain that how to sort these things. So let's start. So explain the comparator operator. I'm going to solve it 3 questions. First one, I will sort a two-dimensional array. I will sort a two-dimensional array list, and I will sort a hash map. And after solving all those questions, I will give you a lead code question that is based on the same concept. You can go on that platform and solve that question for your practice. So let me first create a simple array and a simple array list. And after solving 2D array and 2D array list, at the last I will show you that how to sort a hash map. The concept will be same. So in ARR, the good practice is that you will keep it here, ARR equal to 56, 78, 2, 1. Okay. Now make array list int is 0. अगर आपको कोई भी सजेशन चाहिए VS कोड पे तो यू कैन जस्ट कीप द एरो हेयर कंट्रोल प्लस स्पेस. यहाँ पे वो शो करेगा कि क्या इंपोर्ट करना चाहिए, तो क्लिक ऑन दैट. यहाँ पे कंट्रोल प्लस स्पेस. ओके. So now let's add the element in the list.add 90, list.add -8, list.add 1, list.add 6. Okay, now let's try to sort both of them. So to sort an array, we use array.sort, arrays.sort, arrays, arrays. These are inbuilt methods, so we have to import it in our class. Okay, now let's check the output that array sorted again. Okay, we have to print it also. For int, I'm using for each loop to print this. So system system.out print. So let's check. Of course, it will come as a sorted array and array list. So it is sorted 1 to 56, 78, -8, 1. Now let's create a 2D array and the 2D array list. Let's come into this code and create a 2D array. So in the first row I'm putting 78, 9, 87. In the second row, okay. Let's create a list of list.
So 2D array list में let's add the element by using the loop. Okay, let's add the element into the list. You can skip this part, like you can see it in 2x so that you will not get bored. So now let's try to sort this 2D array and 2D list by using the above methods. So let's see. So arrays dot sort. Okay, I'm giving here, what is the name, td, and to-do list. So it is showing error, as you can see, because we cannot sort a 2D array list. But it is not showing error, but let's still try to print both of them. And even if it is not showing the error, but if we print it, it is not in the sorted order. So let's print it. Let's use the same. So this one is showing error. It means we are sure that we are not able to sort the 2D array list by using the collections.sort method. So let's comment it out. I no need to print it. We will print just 2D array and let's see that it is sorted or not. So let's give this, and let's write a loop for in I equal to 0, I is less than. I'm just changing the name because it's confusing. So let's try to print it and let's see that it is sorted or not. Okay, so it is not showing error on the compilation time, but it is showing error on the runtime error. So as you can see, we are not able to sort it. If we comment it, we are able to print the array, 2D array. Yeah, we are able to print it. So now my purpose is to sort the 2D array as well as the 2D list based on the first element. Means in this, and if the first element is same, then we have to sort it by using the second element.
So here, as you can say, after sorting, we want a result in which we will get this, second we will get this, and then we will get this one. Okay, so let's try to sort it by using the comparator operator. I'm commenting this. Let me write some comment. Okay, so now as we need to sort it, so we have to create a comparator. We have to use the comparator interface. So come over the class. We have to create a class sort. I'm creating sort me. Instead of sort me, you can put any another name also. Okay, so let's just create class sort me extends Okay, so let me explain this code. As I already told that comparator is an interface. Okay, and inside interface there is a method, and we all know that a class can implement an interface. And if a class is implementing an interface, then we must have to write the body of all the method inside our class that is already present in that interface. So if you can put the cursor, you can see that the type sort me must implement the inherited abstract method. Okay, so there is abstract method that we have to inherit it, and by using that method we are able to sort our array. So let's do it. Public int compare. Okay, since we are sorting an array, so here we have to give the parameter. Okay, see this is an array parameter, and here also, since we are sorting a 2D array, so 2D array is made up of 1D array. Okay, so we need to give here the 1D array, means this one, ARR1. Okay, now let's understand here carefully. As I told that the 2D array is made up of one-dimensional array. So inside this method, as a parameter, we have to pass a one-dimensional array. The main thing is that how we can sort it. Okay, so if you try to explore this concept on GFG or any other platform, you might get confused. So simply remember one thing, that if I have to sort array in ascending order, then I will do A minus B. Okay, if I have to sort an A means first one, B means second one. If I have to sort an array in descending order, then we will do B minus A. Just simply remember this statement. Now we have to sort in ascending order. Okay, and sort on what basis? On the second element, of each row. So let's take two value into value 1. Value 1 means what? We have to sort in ascending order, so we will take the A minus B. A means kya? First array, ARR1, which first element means 0, minus ARR of 1. Okay, into value 2. So ARR of 2, sorry, ARR of 1, second element, ARR of okay. Now, like I already told that we are going to sort this based on the first element, and if the first element matches, then we will sort it based on the second element. So to sort in ascending order, what we can do? We will return A minus B. To sort in descending order, we will return B minus A. So this is A minus B. This is also A minus B, but based on the second element. This is also A minus B based on the second element. Okay, so we give a condition that if the first element is same, means if value 1 equal to 0, then return value 2. Other, if value 1 is not 0, then return value 1. Okay, so we did this. Let me explain you once again the concept of this. So as we see that we are not able to sort a two-dimensional array by using the traditional methods. So to sort it, we use a comparator method. Inside that there is we used comparator interface. Inside that we have a compare method, and inside that method we put the one-dimensional array. Why one-dimensional array? Because the two-dimensional array is made up of one-dimensional array. That's why we put. And if we have to sort in ascending order, we will do first minus second. If we have to sort in descending order, then we will do second minus first. Okay, so and our condition is what? That we have to sort on the basis of first element.
means if the first element is not same, then we have to sort on basis of first element. But if the first element is same, then we have to sort on the basis of second element. So, and in the ascending order, that's why we are doing a minus b, means first minus second. So AR of 1 0 minus itna, or AR of 1 1 minus AR of 2 1. So value 1 value 2. So if value 1 equal to 0, means if first element is same, then return second element. Otherwise, return the first element. So I hope you understood this. Now use that arrays dot sort here. Array dot sort AR2. Here we have to write new sort me. Okay, new sort me. The sort me is the name of the class that we created. Now let's try to print it. So a bit. I'm keeping it here. It is before sorting. Okay, and this is after sorting. I'm just arranging it. This is before and this is after sorting. So let's check the output. Okay, so as you can see, before sorting we get this one, and after sorting we get this. Okay, so now let's try to sort the two-dimensional array list. So we can apply the same logic, same everything. Let's see the code. I will explain in between. So I'm commenting this also. Okay, so now let's try to do this. This is an array list, 2D array list. We will again create a new class for that also. By same logic, everything is same. Implements comparator. And in the previous code, we have written int. But here, since it is a 2D array list, so 2D array list is made up of what? You can see here. It is made up of 1D list. So we will keep here list. Okay. Now the same process. Again, everything is same, just we need to change the parameters. Okay, so now we can use this sort2 class to sort our 2D array list. So let's do that. So here we can use the same thing.
Now let's sort it. Codally collections dot sort list 2, and you have to create new. Okay, let's see the output. Okay, एक्चुअली मैंने यहाँ पे डेटा ऐड किया ही नहीं अभी तक, सो लेट मी ऐड इट. So before sorting, let me try to use this collections dot sort list 2. Yeah, it will show error. It will show compilation error. Let's delete it. So before sorting this and after sorting, we are going to print the result. Oh, why it is not coming? Okay, actually मैंने यहाँ पे print statement लिखा ही नहीं था. So let's try to run it again. So again I am explaining it that how to use comparator operator for list of list. The same everything class sort में, इसका आप कोई भी नाम रख सकते हो, कोई मतलब नहीं है. Implements comparator operator. इस comparator operator के अंदर एक मेथड है, उस मेथड के हेल्प से हम लोग अपने लिस्ट ऑफ लिस्ट को सॉर्ट करने जा रहे हैं. और चूंकि लिस्ट ऑफ लिस्ट जो है वो किससे बना हुआ है, वो बना हुआ है लिस्ट ऑफ इंटीजर से. सो इसलिए यहाँ पे हम लोग लिस्ट ऑफ इंटीजर पुट किए हैं. फिर आ जाते हैं इसके मेथड में. सो यहाँ भी लिस्ट ऑफ इंटीजर L1, लिस्ट ऑफ इंटीजर L2, और फिर यहाँ पे सेम लॉजिक जो हमने ऊपर अप्लाई किया था. एंड नाउ हियर वी क्रिएटेड अ 2 डायमेंशनल एरे लिस्ट जिसके अंदर लिस्ट होंगे. सो पहले मैंने लिस्ट क्रिएट किया, temp1 temp2 temp3 तीनों के अंदर एलिमेंट पुट किया. फिर temp1 temp2 और temp3 को लिस्ट ऑफ लिस्ट में पुट कर दिया. यहाँ पे मैंने अभी तक सॉर्ट नहीं किया है. सो बिफोर सॉर्टिंग आई एम प्रिंटिंग लिस्ट 2. यहाँ पे मैं सॉर्ट कर चुका हूँ. सो आफ्टर सॉर्टिंग आई एम प्रिंटिंग लिस्ट 2. सो लेट्स सी. Okay, so as you can see that we can, let me run. It's basically you are confused otherwise. Before sorting it is this one, पहले ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, but after sorting it is coming the same. Okay, oh actually this class is not working. I don't know. सो एक्चुअली मैंने यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट में गलती की थी, कन्फ्यूजन में गलती हुई थी, बट प्रोबेबली ये अब रन करेगा क्योंकि मैंने रिटर्न स्टेटमेंट गलत लिख दिया था वहाँ पे. लेट्स सी. यस, एक्चुअली गलती यहाँ पे क्या हुई थी कि वैल्यू 1 = 0 तब मैं वैल्यू 2 रिटर्न कर रहा था, और बाद में भी वैल्यू 2 रिटर्न कर रहा था, बट ये होना नहीं चाहिए. ठीक, इसलिए यहाँ पे दिक्कत हुई है. सो यहाँ पे होना चाहिए कि वैल्यू 1 0 है तब वैल्यू 2 ऐसे वैल्यू 1. सो यू कैन सी दैट नाउ बिफोर सॉर्टिंग एंड आफ्टर सॉर्टिंग. यू कैन सी बिफोर सॉर्टिंग
both over ये print हो रहा है. Before sorting, it is this. After sorting, it is in the sorted order. So by using the comparator operator, you can sort the array of array and means two-dimensional array. Now try to understand that how we can sort a hash map using the comparator operator. And क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा ऑलरेडी हो चुका है, so मैं पहले से कोड लिख चुका हूँ और आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन इट. So let's create a program statement and we try to solve that program statement, and based on that we will understand the concept. So मेरे पास एक हैश मैप है, ठीक. एज यू कैन सी हियर आई क्रिएटेड अ हैश मैप जिसमें कि मैंने की और वैल्यू को स्टोर किया है, की वैल्यू. और मेरा प्रॉब्लम ये है कि मेरे को जो हाईएस्ट वैल्यू के एलिमेंट है उनको सबसे ऊपर रखना है. ओके, सो आई जस्ट क्रिएटेड इट एंड ओके. सो हैश मैप में एक चीज़ हमेशा याद रखो कि हैश मैप जो होता है वो ऑर्डर्ड नहीं होता. ऑर्डर्ड मीन्स अगर हम पहले 1 और 6 पुट किए तो जरूरी नहीं कि वो 1 और 6 ही हो, इट विल चेंज. सो इसके लिए टू कीप इट कॉन्स्टेंट वी हैव टू यूज द लिस्ट. ओके, सो लिस्ट किस टाइप का लिस्ट? सो लिस्ट होना चाहिए हैश मैप टाइप का. सो ठीक है, हैश मैप टाइप का लिस्ट होना चाहिए, बट हम यहाँ पे डायरेक्टली हैश मैप पुट नहीं कर सकते. हैश मैप की जगह हमको पुट करना होगा मैप डॉट एंट्री इंटीजर कॉमा इंटीजर. ओके, मीन्स कहीं भी अगर आपको हैश मैप एज अ पैरामीटर पास करना है तो आप यही स्टेटमेंट वहाँ पे यूज करोगे, मैप डॉट एंट्री इंटीजर कॉमा इंटीजर. इसका मतलब ये है कि जो हैश मैप है वो इंटीजर कॉमा इंटीजर टाइप का है, मतलब उसका की भी इंटीजर है और उसका वैल्यू वो भी इंटीजर है. सो हमने यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट कर लिया और उस लिस्ट के अंदर अपने हैश मैप को पुट कर दिया. ठीक, सो सी है लिस्ट जो कि हैश मैप टाइप का है और एरे लिस्ट है वो, उसके अंदर हम क्या एच एम डॉट एंट्री सेट मीन्स जो हैश मैप है उसको पुट कर चुके हैं. ठीक, यू कैन ट्राई टू प्रिंट इट हियर देन यू विल गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग. अगर हम यहाँ पे लिस्ट को प्रिंट करें तो वो लिस्ट के अंदर सारा वो हैश मैप आएगा. लेट्स सी 1624374261. ओके, सो लिस्ट के अंदर अभी ये सारा चीज आ चुका है. अब what my purpose is to sort that list. So let's first print the list before sorting. ओके, तो सॉर्टिंग से पहले अपने लिस्ट को प्रिंट करते हैं. तो अगर हम सॉर्टिंग से पहले लिस्ट को प्रिंट करें तो वी विल गेट द सेम आउटपुट 16 मीन्स पहले आना किसको चाहिए था 34 को, क्योंकि वो नंबर उसका ज़्यादा है, मतलब 234 बार ये तो 34 को ऊपर आना चाहिए था. मीन्स आई एम ट्राइंग टू सॉर्ट दिस हैश मैप इन डिसेंडिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन इट वैल्यू. मीन्स सबसे बड़ा जिसका वैल्यू है वो सबसे पहले आएगा अकॉर्डिंग टू दैट. So as you can say before sorting we are not getting this result, so let's sort it. So collection dot sort new sort map. Okay, so this is the class we have created. So let's come to the class and let me explain that how this class work. Sort map. So यही एक class है जिसकी मदद से I am going to sort the hash map. ठीक है, so as usual the same here class sort map implements comparator यहाँ पे interface है और sort map जो class अभी create किया है we can change the class name whatever you want to keep you will keep it. और इसके अंदर चूंकि हम लिस्ट को कर रहे हैं, ठीक, वी आर सॉर्टिंग अ लिस्ट क्योंकि हम हैश मैप को लिस्ट में यहाँ पे रख चुके हैं. सो वी आर सॉर्टिंग अ लिस्ट. लिस्ट के अंदर क्या है हैश मैप है. सो अगर लिस्ट के अंदर हैश मैप है सो यहाँ पे हमको एज अ पैरामीटर वो हैश मैप पास करना होगा. सो वी आर पासिंग द हैश मैप एज अ पैरामीटर मैप डॉट एंट्री इंटीजर कॉमा इंटीजर. अब कंपैरेटर ऑपरेटर के इनसाइड में एक कंपेयर फंक्शन है, उस फंक्शन का यूज करके हम लोग हैश मैप लिस्ट को सॉर्ट करने वाले हैं. ओके, सो सी दिस इज द फंक्शन पब्लिक इंट कंपेयर और हम लिस्ट को सॉर्ट करने वाले हैं और उस लिस्ट जो है वो किस चीज का बना हुआ है हैश मैप का. सो इनसाइड द पैरामीटर वी विल पुट मैप डॉट एंट्री इंटीजर कॉमा इंटीजर. ओके, now we are going to sort on the basis of value. So as I already told you that if we need to sort on the basis of anything if we want to sort in descending order then we will do second minus first. So here we want to sort it on the basis of value. So we will do m2 dot get value. m2 क्यों? क्योंकि ये b है, सेकंड वाला ये. ओके, और हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है इसलिए m2 पहले m2 डॉट गेट वैल्यू माइनस m1 डॉट गेट वैल्यू. बाई चांस अगर वैल्यू दोनों किसी भी मैप का सेम हो तब क्या करना है, तब की में सॉर्ट कर देना है, जिसका की ज़्यादा रहेगा वो ऊपर आएगा. तो ठीक है, m2 डॉट गेट की माइनस m1 डॉट गेट की. एंड यहाँ पे हम लोग रिटर्न कर रहे हैं कि अगर वैल्यू इक्वल टू जीरो है मीन्स अगर किसी भी एलिमेंट का वैल्यू जीरो है मतलब दोनों का वैल्यू सेम है, देन वी नीड टू सॉर्ट ऑन द बेसिस ऑफ की मीन्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, and otherwise we have to sort on the basis of value. Okay, so we created this method. Now let's try to run that. So this is hash map before sorting and this is the hash map after sorting. So let's print it and check the difference. Okay,
So before sorting, we are getting this 1 6 मीन 6 पहले जो कि होना नहीं चाहिए था। अगर हम सॉर्ट कर चुके हैं तो सॉर्टिंग से पहले तो ये सही है, और हम सब सॉर्ट कर चुके हैं तो 34 पहले आया क्योंकि सबसे ज़्यादा वैल्यू इसका है, फिर 20 वाले का, फिर 7, फिर 6, फिर 1. Okay, so by this we can sort the two-dimensional array, we can sort the list of list, we can sort HashMap. And the question about which I talked earlier is this question number 347, top के frequent element. So इसमें भी HashMap का यूज करना है, फिर HashMap को sort करना है, and you will get, means if you understand the concept that I taught you in this video, you will be able to solve this question very easily. So in the description I will provide you the link of this question and the code, whatever I written here. So that's it. Thanks to all.